शेजवान सोया चंक्स। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम सोया चंक्स। सोया चंक्स को हम 10 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे और इसको निचोड़ लेंगे। 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 to 4 टेबलस्पून शेजवान सॉस, करी लीव्स, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 tablespoon ginger garlic paste, 1 tablespoon coriander powder, 1 teaspoon garam masala, 2 tablespoon rice flour, 1 tablespoon Kashmiri red chili powder, salt to taste, oil for cooking। अब हम सोया चंक्स में कॉर्नफ्लोर डालेंगे, राइस फ्लोर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, इसी तरह हम सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लेंगे। सोया चंक्स फ्राई हो गए हैं, अब हम ग्रेवी रेडी करते हैं। पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें गार्लिक डालेंगे, इसको फ्यू सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे। गार्लिक सौटे हो गई है, अब इसमें हम करी लीव्स डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शेजवान सॉस डालेंगे। अब इसमें हम ऑरेंज रेड एडिबल कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम फ्राइड सोया चंक्स डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम 2 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। 2 मिनट्स हो गए हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी शेजवान सोया चंक्स। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक कीजिए। बाय।